yesterday we have seen there are two types of phases, metabolism, phase 1 and phase 2. So in case of phase 1, there is a three reaction, oxidation, reduction and hydrolysis. In oxidation, there are various types. Then in reduction, there are 3 to 4 types and hydrolysis reaction. So these are the three in phase 1. Then in case of phase 2, it is also called as conjugation reaction. In that there are various types, glucuronic acid, sulfate, glycine conjugation, etc. Then in phase 1, we started oxidation. So in oxidation, the enzyme is required, that is microsomal mixed function oxidase, also called as cytochrome P450 enzyme. So for oxidation, enzyme plus oxygen is required. So the component of this enzyme, cytochrome P450, there are three components. First one is heme protein. It contains Fe3 plus, Fe2 plus converted into Fe3 plus during the oxidation. Second one is reductase part, and third one is phosphatidylcholine. So it is the enzyme. Then general process, how oxidation is taken place. It is the cycle. It is a ऊपर general reaction दिया है. RH means your drug, oxygen added, that is oxidation. It converted into ROH. Now the cycle of oxidation is, for example, for here the enzyme cytochrome P450, which consists of Fe3 plus. Then drug is added, means drug is interact with this enzyme to form a complex. Then there is a reduction or electron added. Then Fe3 plus converted into Fe2 plus. Then there is a oxygen added, and here there is a formation of ternary complex, enzyme, oxygen plus your drug or substrate. Then again there is a reduction. Then reduction means here there is a activation of oxygen, O2 converted to O2 minus. And then finally there is the oxidation, RH converted into ROH, and this Fe2 plus again converted into Fe3 plus. And then again there is a separation of substrate and enzyme, and then whole cycle is repeated. So it is the general cycle of oxidation. Now there are various types of oxidation. So important one is here. First one is oxidation of aromatic amine and aliphatic or side chain hydroxylation. First one is oxidation of aromatic carbon or aliphatic or side chain hydroxylation. Second one is oxidation of alkenes or called as olefins. Then oxidation of benzylic carbon. Then oxidation of carbon heteroatom. In that there are 3 to 4 to 5, N dealkylation, N hydroxylation, N oxide formation, S dealkylation, oxidative deamination. Now see one by one. In case of oxidation, one by one we see. So here first one is aromatic and side chain hydroxylation. So as name indicate, aromatic ring अगर है तो उसमें hydroxylation या oxidation किस तरह होता है. So this reaction is proceed via the formation of epoxide, which rearrange and yield arenol and in some cases catechol. So it is a general structure. Arene means aromatic compound. Then there is a formation of intermediate called as arene oxide or also called as epoxide, means oxygen bridge. Arene oxide or called as epoxide. Then this converted into phenol, that is arenol. So it is a general reaction. Now see the example. For example, phenylbutazone. So it is an analgesic drug, phenylbutazone. So it consists of two aromatic rings. So कोई भी एक aromatic ring, especially hydroxylation taken place on the para position of the aromatic ring. Generally para position पे होता है. So phenylbutazone converted into oxyphenbutazone. So this arrow show site where the hydroxylation taken place. So यहाँ पर hydroxylation होता है इस तरह से. So it is called as oxyphenbutazone. So it is the metabolite of this drug. But here the metabolite is also active drug. So here both reactant or metabolite are the active compound. Phenylbutazone भी analgesic use होता है, oxyphenbutazone भी analgesic use होता है.
So this phenylbutazone converted into phenylbutazone by the through the oxidation at para position. And second example is acetanilide. So it is the structure of acetanilide. So first it converted into intermediate like bridge, arene oxide, and finally on para position there is a hydroxylation. So it is a para hydroxy acetanilide. So acetanilide converted into para hydroxy acetanilide. So it is an example of aromatic hydroxylation. Now, aliphatic chain hydroxylation. So here is the example is valproic acid. So it does not contain any ring. So the aliphatic compound is simple chain compound. Valproic acid. It is an anti-epileptic drug. So it undergo two types of oxidation, omega and omega 1. W means it is not W, it is the omega sign like a W, small w, omega, and this one is omega minus 1 or omega 1. So what do you mean by omega oxidation? So when oxidation or hydroxylation taken place at last carbon, then it is called as omega oxidation. For example, here this carbon is considered as last carbon. So this CH3 simply converted into CH2OH. एक हाइड्रोजन निकालना है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना है. So it is on last carbon, therefore it is called as omega hydroxylation. Compound name is 5-hydroxy valproic acid. Again, there is omega 1. Omega 1 means second last carbon. When hydroxylation taken place at second last carbon, so this one is second last carbon. So this CH2 converted into CHOH. One hydrogen is removed, hydroxylation add करना है. So it is a 4-hydroxy valproic acid. So valproic acid undergo omega hydroxylation or omega 1 hydroxylation. So in case of omega hydroxylation taken place at the terminal carbon or called as last carbon, terminal carbon. And omega 1 means second last. It is also called as penultimate. The scientific term for second last is penultimate carbon. So it is the hydroxylation of aliphatic compound. Similarly, next example, amobarbital. It is a hypnotic sedative. Amobarbital. So here this carbon considered as a last carbon or hydroxylation taken place at this carbon. So this hydrogen is replaced by OH group only. So it gives 3-hydroxy amobarbital. So amobarbital converted into 3-hydroxy amobarbital. So it is also example of hydroxylation at aliphatic compound. So it is the example. So it is about the first one, aromatic and aliphatic hydroxylation. Second oxidation is second type, oxidation of alkenes or called as olefins. The metabolic oxidation of olefinic means carbon-carbon double bond. Alkene, carbon-carbon double bond leads to epoxide. The epoxide are susceptible to enzymatic hydration by epoxide hydrase to form 1,2-dihydrodiol. Example is given. Example is carbamazepine. So see here 10 and 11 position there is a double bond. So it is a alkene. So here on alkene hydroxylation is taken place through the same reaction epoxide formation. So this pi bond is break and there is a formation of epoxide bridge. And then there is a hydration means वाटर मॉलिक्यूल डालना है तो कोई भी एक बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे ये साइड में OH ऐड करना है और इधर हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपको 2 OH मिलेंगे. So it is a dihydroxy carbamazepine. So oxidation of alkene or olefins. So here oxidation taken place at the alkene means at the double bond. So here pi bond is break to form the bridge and then hydration means addition of water molecule. तो कोई भी बॉन्ड इधर ये बॉन्ड ब्रेक करना है हाइड्रोजन ये बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो ये O माइनस हो जाएगा इधर O माइनस तो वहां पर एक हाइड्रोजन ऐड करना OH और इधर OH तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है. So it is the example of oxidation of olefins.
थर्ड ऑक्सीडेशन टाइप, ऑक्सीडेशन एट बेंजाइलिक कार्बन, सी स्पेलिंग बेंजाइलिक. Benzylic carbon means carbon attached to aromatic ring directly are susceptible to oxidation forming alcohol metabolite. For example, tolbutamide is a drug. Tolbutamide is an anti-diabetic drug. Diabetes में use होता है tolbutamide. So this carbon CH3, it is called as benzylic carbon directly attached to ring. So this CH3 first converted into alcohol by the oxidation. So एक हाइड्रोजन निकालना है और उसकी जगह OH या सिंपली उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है. तो इट गिव अल्कोहलिक प्रोडक्ट. सो CH3 converted into alcohol. Then again this alcohol converted into aldehyde. Aldehyde मतलब इसमें से H2 निकालना है. तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? Either addition of oxygen or removal of hydrogen, same thing. तो यहाँ पर CH2OH, फिर एक कंपाउंड जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं है लेकिन एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है जिसमें अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा. ऊपर ये दिया है CH2H converted into aldehyde, then aldehyde converted into acid. So this CH2OH converted into aldehyde by removing of this hydrogen. Then this aldehyde after oxidation converted into acid. So it is called as oxidation at benzylic carbon. So tolbutamide first converted into alcohol metabolite, then into the aldehyde metabolite, then into the acid metabolite. So simple reaction है. CH3 पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, फिर बाद में अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, बाद में एसिड में, थ्रू दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Then next type, this one is important, oxidation of carbon heteroatom system. Oxidation at carbon heteroatom. Carbon heteroatom means carbon और heteroatom. hetero में कौन कौन से आते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आते हैं, सल्फर, ये सिस्टम आते हैं कार्बन हेटेरोएटम. तो उसमें पहला एन डी अल्काइलेशन. एन डी अल्काइलेशन. सो नेम इंडिकेट de-alkylation means removal of alkyl group. De-alkylation मतलब removal of alkyl group. कहां से? नाइट्रोजन से. तो नाइट्रोजन से अल्किल ग्रुप को निकाल देंगे तो उसको बोलेंगे एन-डी-अल्काइलेशन. नाउ तो उसका एक जनरल मैकेनिज्म है, हाउ दिस डी-अल्काइलेशन टेकन प्लेस. मैकेनिज्म हाइड्रोक्सिलेशन. तो यहाँ पर एग्जांपल दिया टर्शियरी अमाइन. सी हियर जनरल स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है. हियर इज सी हेट्रो. सी हेट्रो मतलब कार्बन हेट्रो एटम से अटैच है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक्ट एज ए हेट्रो एटम. सो ये जो कार्बन है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, यानी जो नाइट्रोजन के बाजू का है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन. ये पॉइंट याद रखना है. कार्बन एडजेसेंट टू हेट्रो एटम इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. तो ये टर्शियरी अमाइन है. इसका जनरल मैकेनिज्म, हाउ एन डी अल्काइलेशन टेकन प्लेस, तो उसका ये जनरल मैकेनिज्म है. और ये डी अल्काइलेशन, इसमें अल्किल ग्रुप निकल जाता है. तो किस तरह निकलता है? तो पहली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिनोलामाइन. कार्बिनोलामाइन तो पहले जो स्टेप है उसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन, यानी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिलेशन करना, ये पहली स्टेप है. तो ये अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन निकाल के OH, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन. ये स्टेप याद रखो, आगे भी काफी बार आने वाली है. एंड दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज कार्बिनोलामाइन. सो स्टेप 1 is called as alpha hydroxylation. Alpha hydroxylation means removal of hydrogen from the alpha carbon and there is a substitution of OH group. तो यहाँ पर सिर्फ OH ग्रुप आ गया अल्फा कार्बन पे. इंटरमीडिएट का नाम है कार्बिनोलामाइन. So it is the first step. In second step, see, follow the arrow. हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा, इट बिकम डबल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज ब्रेक. ये याद रखना है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है. तो ये ब्रेक होगा तो ये N माइनस हो जाएगा और बाद में यही हाइड्रोजन यहाँ पर आके ज्वाइंट होगा. तो वी गेट टू प्रोडक्ट. पहला प्रोडक्ट
सेकेंडरी अमाइन, और दूसरा प्रोडक्ट ये जो डबल बॉन्ड हुआ है ये है कार्बोनिल मोइटी, विच में बी एल्डिहाइड, विच में बी कीटोन. So in short, tertiary amine converted into secondary amine plus carbonyl compound, which may be aldehyde, which may be ketone. So ये सिंपल मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म याद रखना है, काफी बार आगे आने वाला है. So ये दो स्टेप है, सिंपल स्टेप है. पहला है अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन, यानी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिलेशन करना है. हाइड्रोक्सिलेशन करना मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन निकालना है, उसकी जगह OH को सब्स्टिट्यूट करना है. इट फॉर्म दी कार्बिनोलामाइन. दूसरा स्टेप है ये रीअरेंजमेंट है, ये भी याद रखो किस तरह से रीअरेंजमेंट हो रहा है. तो इसमें हाइड्रोजन निकाल देना है जो अटैच हुआ था हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से, उसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड हो गया. और बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है ये भी याद रखना है. तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, अभी हम यहाँ पर CN सिस्टम देख रहे हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक करना है, ना कि इधर वाला ना ये, बल्कि आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना रहेगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये वाला प्रोडक्ट लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का ये वाला. और ये हाइड्रोजन ही इधर आके ज्वाइंट होता है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इट बिकम डबल बॉन्ड, and this hydrogen is shifted here. So we get secondary amine plus carbonyl moiety. So it is the general mechanism. So mechanism क्या है? Hydroxylation of alpha carbon to form carbinolamine, which undergo spontaneous CN cleavage. कार्बन नाइट्रोजन ये बॉन्ड हमने क्लीव ब्रेक किया है, तो CN cleavage to give secondary amine and carbonyl moiety. तो अगर हम देखेंगे तो इसमें हुआ क्या है, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप निकल गया, दैट इज अल्किल ग्रुप निकल गया. ये जो अल्किल ग्रुप से ही अल्डिहाइड बन गया. Therefore it is called as a dealkylation, means removal of alkyl group. कहां से? नाइट्रोजन से. तो ये नाइट्रोजन से अटैच है तो ये ग्रुप निकल जाता है. Therefore it is called as dealkylation, the removal of alkyl group from the nitrogen. It is the definition of N-dealkylation. So this dealkylation, removal of alkyl group. तो इस तरह से ये दो स्टेप में ये मैकेनिज्म होता है. तो ये जनरल मैकेनिज्म है. अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, डायरेक्टली प्रोडक्ट देखेंगे. नाउ द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इमिप्रामीन, इट इज अ CNS डिप्रेशन ड्रग. इमिप्रामीन, सो ये इमिप्रामीन का स्ट्रक्चर है, साइड चेन में CH2 CH2 CH2, नाइट्रोजन CH3 CH3. अब यहाँ पर डीअल्काइलेशन करना है. डीअल्काइलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CH3 अल्किल ग्रुप फ्रॉम द नाइट्रोजन. तो पहले ये CH3 निकल जाएगा. मैकेनिज्म सेम जो हमने पीछे देखा, वही मैकेनिज्म से ये निकल जाता है. तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी प्रोडक्ट देखेंगे. सो इमिप्रामीन, आफ्टर फर्स्ट डीअल्काइलेशन, दिस रिमूवल ऑफ CH3, ये हाइड्रोजन आ गया उसकी जगह, जैसा पीछे यहाँ पर NH हो गया था, सी NH, अल्किल ग्रुप निकल के NH. तो वैसे ही यहाँ पर ये अल्किल ग्रुप निकल के NH. इसको बोलते हैं डेस मिथाइल इमिप्रामीन. इमिप्रामीन ये ड्रग है, उसका पहला मेटाबोलाइट, तो ये अल्डिहाइड निकल गया. जैसे पीछे कार्बोनिल मोइटी रिमूव हुआ था, तो वैसे यहाँ पर भी, वहां पर भी अल्डिहाइड ग्रुप इज रिमूव्ड. So it is a dealkylation. पहला CH3 निकल गया, इसका नाम है डेसमिथाइल इमिप्रामीन और जनरल नेम इज डेसिमिप्रामीन. अगेन सेम रिएक्शन होगा, दूसरा CH3 ग्रुप भी निकल जाएगा, so it become NH2. अगेन देयर इज अ रिमूवल ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप. तो यहाँ से दोनों CH3 निकल गए, इसका नाम है बिस डेसमिथाइल इमिप्रामीन, सॉरी bis desmethyl imipramine. So here there are dealkylation twice, दो बार dealkylation हुआ है, एक वन बाय वन ये दोनों CH3 ग्रुप निकल गए हैं. So imipramine after first dealkylation converted into desimipramine, also called as desmethyl imipramine. Again after second dealkylation, there is the removal of second CH3 group, then it is formed bis desmethyl imipramine. This means twice.
So it is the example of dealkylation. Another example, methamphetamine. It is a methamphetamine, which is a CNS stimulant drug. Meth, methamphetamine. So see here, ये alkylation करना है, ये निकाल देना है CH3 group. So it become NH2. So it form the amphetamine. So here dealkylation means removal of this CH3 group. So it form amphetamine. So methamphetamine after N-dealkylation, it form the amphetamine. और फिर amphetamine और आगे मेटाबोलाइट होता है दूसरे मैकेनिज्म से जिसको डीअमाइनेशन बोला जाता है. इट फॉर्म फिनाइल एसीटोन. तो ये जो पहली स्टेप है, इट इज अ डीअल्काइलेशन रिएक्शन. यहाँ पर भी कार्बोनिल मॉइटी सेपरेट हुआ. So this removal of CH3 from nitrogen by the same general mechanism, methamphetamine converted into amphetamine, and then this amphetamine after deamination, NH3 converted into phenyl acetone. तो ये जो स्टेप है, ये भी इसका भी मैकेनिज्म सेम है. अगर हम देखते हैं ये सेकंड स्टेप, ये तो पहला स्टेप तो सेम है जो पीछे गया. अब सेकंड स्टेप में कैसा होता है, ये नाइट्रोजन है, उसके बाजू का ये अल्फा कार्बन है. तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिलेशन, ये हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पर OH आ जाता है. फिर सेम रीअरेंजमेंट करना है, OH में से हाइड्रोजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे निकलेगा NH3, ये NH2 और इधर से हाइड्रोजन. तो इस तरह से अमाइन निकल रहा है यहाँ पर, तो इसको डीअमाइनेशन बोला जाता है. ये पहला वाला डीअल्काइलेशन है, दूसरा डीअमाइनेशन. तो यहाँ पे अमाइन ग्रुप निकलने के बाद में फिनाइल एसीटोन बनता है. So it is an example of N-dealkylation. Similarly, दूसरा जो है उसी का टाइप में, सब टाइप में O-dealkylation. पहले वाला था N, नाइट्रोजन से डीअल्काइलेशन करने का. अब है ऑक्सीजन डीअल्काइलेशन. तो यहाँ पर भी मैकेनिज्म सेम है. So it also involve alpha carbon hydroxylation to form hemiacetal hemiketal, which undergo spontaneous carbon oxygen bond cleavage to yield dealkylated species phenol or alcohol. तो यहाँ पर अब क्या है, O dealkylation. पहले वाला था N, नाइट्रोजन डीअल्काइलेशन. अब ये O मतलब ऑक्सीजन से अल्किल ग्रुप को निकालना है. तो एग्जांपल ईथर, एक जनरल मैकेनिज्म सेम है, कोई भी चेंज नहीं है. तो ईथर, ये ऑक्सीजन हेटेरो आइटम है, उसके बाजू का ये अल्फा कार्बन. तो पहले स्टेप में क्या करना है, अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन. अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन निकाल दो, OH. सेम रीअरेंजमेंट, ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है. अब यहाँ पर बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, CO. पिछले रिएक्शन में CN ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर अब CO ब्रेक करना है. ये याद रखना है, स्लाइटली चेंज है. पीछे जो रिएक्शन किया वो CN सिस्टम था, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये CO ब्रेक करना है. ये बॉन्ड ब्रेक करना है. अगेन वी गेट टू प्रोडक्ट, एक तो वही कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा और दूसरा अल्कोहल या फिनॉल. और यहाँ पे कार्बिनोलामाइन की जगह इस कंपाउंड को बोला जाता है हेमी एसिटल. अगर अल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल मिलता है, अगर कीटोन है तो हेमी कीटोन, केटल बोला जाता है उसको. सो मैकेनिज्म इज सेम, जो पीछे था सेम मैकेनिज्म है. फर्स्ट अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन टू फॉर्म हेमी एसिटल और हेमी केटल. Then there is a rearrangement, hydrogen is removed, this bond shifted here, then there is a breakage of oxygen carbon and we get two product, phenol or alcohol plus carbonyl moiety. तो ये भी डीअल्काइलेशन है, लेकिन डीअल्काइलेशन कहाँ से हो रहा है, ऑक्सीजन से. अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल और ये प्रोडक्ट, तो वो कह रहा है सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है. यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होकर ये पूरा ग्रुप निकल जाता है, इतना ही चेंज होता है. ईथर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. तो ईथर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ऐड करना है, बस पूरा रिएक्शन. लेकिन ये उसका मैकेनिज्म है. नाउ सी द एग्जांपल. तो यहाँ पे भी डायरेक्ट देखना है एग्जांपल. ये है कोडीन. कोडीन फेमस ड्रग है कोडीन. इट इज अ नार्कोटिक ड्रग, mainly used as a antitussive. Antitussive means which remove the cough.
कोडीन, सिरप आती है कोडीन। तो यहाँ पर कहां पर करना है, ये यहाँ पर आपको ओ डी अल्काइलेशन करना है। तो यहाँ पे OCH3 ग्रुप है, OCH3। So here de-alkylation is taken place at this position. So only there is a removal of alkyl group, removal of this alkyl group. So directly it form the morphine. So this bond is break and hydrogen is added. So codeine after metabolism or after oxidation converted into morphine. Morphine is also narcotic analgesic. So codeine converted into morphine, or in another words, morphine after alkylation converted into codeine. So here the O-dealkylation, codeine converted into morphine, and it is a side product, that is carbonyl compound. Similarly, next example is phenacetine. Phenacetine. So here oxidation is taken place here. Oxygen and ethyl group. So this bond is break and it forms the acetoaminophen. Phenacetine converted into acetoaminophen. It is an analgesic drug. Phenacetine converted into acetoaminophen by OD alkylation. तो यहाँ पर सेम मैकेनिज्म से ऑक्सीडेशन करना है, हाइड्रोक्सिलेशन होगा, यानी ये ऑक्सीजन है, अल्फा कार्बन ये है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन करना है, फिर वो रीअरेंजमेंट करके इट फॉर्म दी OH. So it is the example of OD alkylation. Now next type, oxidation of aldehyde and alcohol. Oxidation of aldehyde and alcohol. So many oxidative process generate alcohol or carbinol metabolite as an intermediate. If not conjugated, these alcohol further oxidize to aldehyde if primary alcohol, or to ketone if secondary alcohol. So many drugs after metabolism, many drugs converted into alcohol or carbinol, and this alcohol and carbinol further converted into aldehyde and ketone. So अगर अब प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडेशन के बाद में aldehyde में convert होता है. If metabolite is primary alcohol, then it is converted into aldehyde. If metabolite is secondary alcohol, then it is converted into ketone. Aldehyde often undergo oxidation to generate carboxylic acid derivative, but the ketone which is formed oxidation of secondary alcohol not undergo further oxidation, but ketone undergo reduction back to secondary alcohol. So यहाँ पे one important point is that if metabolite or drug having primary alcohol group, after oxidation it is converted into aldehyde, and this aldehyde again further converted into carboxylic acid, which हमने example देखा tolbutamide. So tolbutamide भी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, बाद में फिर एसिड में कन्वर्ट होता है. सेम हियर इज आल्सो प्राइमरी अल्कोहल. if metabolite is primary alcohol, or if the drug having primary alcohol group, then it is converted into first aldehyde, and this aldehyde is very susceptible to further oxidation to form carboxylic acid. So अगर हम ये वाला रिएक्शन देखते हैं, तो ये जो फर्दर कन्वर्जन ऑफ एसिड है ये ज्यादा फेवर होता है. अल्डिहाइड फौरन कन्वर्ट हो जाता है एसिड में. सो प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, एंड दिस अल्डिहाइड again converted into acid. But in case of secondary alcohol, if the metabolite or drug having this secondary alcohol group, so this one is secondary alcohol, so it is converted into ketone. ऊपर क्या था, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, बट हियर सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, बट दिस कीटोन इज नॉट फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिड. कीटोन आगे कन्वर्ट नहीं होता है,
बल्कि ये बैक कन्वर्ट हो सकता है सेकेंडरी अल्कोहल में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अल्डिहाइड में this aldehyde is very susceptible to further oxidation to form the acid, but ketone not converted into or not oxidized further, but it is written back converted into secondary alcohol. So in short, primary alcohol aldehyde में convert होता है, aldehyde acid में convert होता है. But if the secondary alcohol is there, then it is converted into ketone. But this ketone not further converted, but it returned back to secondary alcohol. So this one is a reversible reaction. So it is the oxidation of aldehyde and alcohol. Then next one is S-dealkylation. S-dealkylation, as name indicate, dealkylation from S, sulfur. So again, mechanism is same. So for example, methyl mercaptopurine, 6-methyl MP means mercaptopurine. So here hydroxylation taken place here, CH3, यानी हेट्रोएटम है, उसके बाजू का कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन. तो सेम मैकेनिज्म, अल्फा कार्बन हाइड्रोक्सिलेशन करना है, तो दिस CH3 converted into CH2OH, and then again rearrangement. After rearrangement, this removal of CH3 and hydrogen transfer here, it become SH. So जिस तरह से N dealkylation था, then उसके बाद में oxygen dealkylation, and this one is S-dealkylation. So 6-methyl mercaptopurine, it is an anti-cancer drug. So this 6-methyl mercaptopurine, after S-dealkylation, it is converted into 6-mercaptopurine. MP means mercaptopurine. So यहाँ पे भी dealkylation हुआ है, similar removal of alkyl group, so it form the SH. So it is about the oxidation. तो फेज 1 में पहला था ऑक्सीडेशन, तो उसमें ये सब टाइप्स है. नाउ फेज 1 का जो दूसरा रिएक्शन है वो है रिडक्शन, अपोजिट, ऑक्सीडेशन के अपोजिट रिडक्शन. इसमें स्मॉल ए है, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. तो ये जो हमने पीछे भी रिएक्शन देखा अल्डिहाइड और कीटोन का, बस इसके ही अपोजिट है आगे का रिएक्शन. तो इसमें क्या हुआ था, वापस एक बार ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिड. In case of secondary alcohol, it is converted into ketone and but not converted into acid, but return back converted into secondary alcohol. तो यहाँ पर रिडक्शन करना है. सो फेज 2 का पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन, उसमें वेरियस टाइप्स देखा हमने. अब फेज 1 का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुआ, फेज 1 का ही रिडक्शन रिएक्शन. तो इसमें भी पहला है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. सो अल्डिहाइड मेटाबोलाइज मेनली टू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि पीछे भी पहले पॉइंट बताया, अल्डिहाइड मेटाबोलाइज मेनली टू कार्बोक्सिलिक एसिड. Occasionally aldehyde reduced to primary alcohol, and ketone are resistant to oxidation and are reduced back to secondary alcohol. पीछे का वही पॉइंट है कि अल्डिहाइड फॉरन कन्वर्ट होता है जनरली एसिड में, कभी कभी वो कन्वर्ट रिटर्न बैक होता है, माइनर चांसेस. मेन क्या है, अल्डिहाइड इज वेरी ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन इनटू एसिड. तो अल्डिहाइड ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में एसिड में कन्वर्ट होता है. इन सम केसेस, इन रेयर केसेस, अल्डिहाइड में रिड्यूस बैक टू प्राइमरी अल्कोहल, बट कीटोन का रिडक्शन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल में होता है, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे मैंने पीछे पॉइंट बताया. सो कीटोन इज नॉट ससेप्टेबल टू फर्दर ऑक्सीडेशन, बट कीटोन रिड्यूस बैक टू सेकेंडरी अल्कोहल. पीछे का ही रिएक्शन है लेकिन अपोजिट है. सो अल्डिहाइड, ये पॉइंट याद रखना है, अल्डिहाइड इज वेरी ससेप्टेबल टू फर्दर ऑक्सीडेशन, एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिड. इन सम केसेस, इन रेयर केसेस, अल्डिहाइड may reduce back to primary alcohol, but ketone always converted into secondary alcohol by reduction. तो ये जनरल रिएक्शन है उसका. तो ये एग्जांपल
एम्फेटामीन, जो कि पीछे भी रिएक्शन गया है, एम्फेटामीन कन्वर्टेड टू कीटोन बाय एन डीअमाइनेशन, पीछे भी हमने रिएक्शन देखा, ये वाला स्टेप, एम्फेटामीन फिनाइल एसीटोन में कन्वर्ट हो गया, अब इसका रिडक्शन होगा। तो ये जो सेकंड रिएक्शन है ये एग्जांपल है रिडक्शन की। सो ये पीछे रिएक्शन गया, एम्फेटामीन आफ्टर ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसीटोन, पीछे देखते हैं वापस रिएक्शन, यही रिएक्शन एम्फेटामीन का, सी एम्फेटामीन फिनाइल एसीटोन, तो यही है, वही रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन वही सेम है आगे, लेकिन वहां पे हमको रिडक्शन देखना है। तो एम्फेटामीन फिनाइल एसीटोन में ऑक्सीडेशन के बाद में, अब रिडक्शन में होता क्या है, सिंपल एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना। सो रिडक्शन मीन्स नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसी को रिडक्शन बोला जाता है। ऑक्सीडेशन के अपोजिट रिडक्शन मीन्स either addition of hydrogen or removal of oxidation। तो ये जो कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो हाइड्रोजन दोनों साइड में ऐड करना है, कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास में एक हाइड्रोजन, और ये पाया बॉन्ड ब्रेक कर देना। तो ये इस तरह से रिडक्शन होता है। ये कंपाउंड का नाम है 1-phenyl 2-propanol, 1-phenyl 2-propanol। So amphetamine after oxidation converted into phenyl acetone, then this phenyl acetone after reduction converted into 1-phenyl 2-propanol। So it is the example of reduction। दूसरा है उसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, पहला हमने देखा रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन चालू है, उसमें पहला था रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जिसमें नाइट्रो ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रो कंपाउंड। ये नाइट्रो कंपाउंड है, एरोमेटिक रिंग एन डबल बॉन्ड ओ या NO2। तो नाइट्रो कंपाउंड पहले नाइट्रोसो में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रोसो, then nitroso further converted into hydroxylamine, and then this hydroxylamine converted into amine। So in short, nitro group after reduction converted into amine, NO2 converted into NH2, it is called as reduction of nitro compound। So simple, nitro group जो है NO2 group, nitro group NO2 आफ्टर रिडक्शन कन्वर्टेड इनटू अमाइन NH2 ग्रुप। लेकिन किस तरह होता है ये, उसकी स्टेप्स है, पहले नाइट्रोसो में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोक्सिलामीन में कन्वर्ट होंगे, एंड देन अमाइन। किस तरह होता है, ये नाइट्रो है NO2। तो यहाँ पे रिडक्शन मतलब क्या है, आइदर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले एक ऑक्सीजन निकाल देना है, तो ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, एरोमेटिक N डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन निकाल दिया आपने, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। फिर क्या करना है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करो, पाया बॉन्ड ब्रेक करो, ये इस तरह से, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो नाइट्रो ग्रुप after reduction first form nitroso, then this nitroso after addition of hydrogen, both side hydrogen add करना है, pi bond break करना है, it form hydroxylamine, then again hydroxylamine में से oxygen remove करना है, ऑक्सीजन निकालना है, तो it become NH2, it form the amine, तो final product है amine। So nitro group after reduction converted into amine group through this process। So first इसमें क्या होता है, नाइट्रो पहले नाइट्रोसो में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोसो कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिलामीन एंड देन इनटू अमाइन। सो नाइट्रो ग्रुप पहले ऑक्सीजन निकाल दो, तो N डबल बॉन्ड O, फिर बाद में हाइड्रोजन ऐड करो, दोनों साइड में पाया बॉन्ड ब्रेक करना है, और बाद में ये ऑक्सीजन निकाल देना, तो ये अमाइन। एग्जाम्पल, तो अब डायरेक्ट एग्जाम्पल, ये ड्रग है, दो ड्रग है यहाँ पे, क्लोनाजेपाम, नाइट्राजेपाम। सो व्हेन R इक्वल टू क्लोरो देन इट इज क्लोनाजेपाम, व्हेन R इक्वल टू हाइड्रोजन देन इट इज नाइट्राजेपाम। तो यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप है, सी नाइट्रो ग्रुप। तो क्या करना है, सिर्फ नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर देना है NH2 ग्रुप, बाकी का स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, सिर्फ हमको बताना है यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप
after reduction converted into amine through this mechanism. So clonazepam or natrazepam after reduction converted into 7 amino metabolite. So it is the metabolite of clonazepam and natrazepam. So it is a reduction of natro compound. So ये एग्जाम्पल है. इसमें थर्ड है रिडक्शन में अजो रिडक्शन, AZO, अजो रिडक्शन. अजो मतलब ये कंपाउंड को बोला जाता है अजो कंपाउंड, जिसमें N डबल बॉन्ड N और एरोमेटिक रिंग होता है, इसको बोलते हैं अजो कंपाउंड. उस टाइप के कंपाउंड का रिडक्शन किस तरह होता है. सो रिडक्शन में हमने ये तीसरा टाइप चालू है. पहला था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप और तीसरा है एजो रिडक्शन. तो एजो कंपाउंड मतलब इस टाइप के कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है. तो यहाँ पर भी क्या करना है, एजो कंपाउंड एक हाइड्रोजन इधर ऐड करो, एक हाइड्रोजन इधर, ये पाया बॉन्ड ब्रेक करो. तो ये हो गया इस तरह से. अगेन एक हाइड्रोजन इधर ऐड, एक हाइड्रोजन इधर, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर देना है. तो दो कंपाउंड मिलेंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला. सो इफ यू गेट टू अमाइन कंपाउंड, दो अमाइन कंपाउंड मिलेंगे आपको. सिंपल रिएक्शन है. अजो कंपाउंड मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर. तो पहले पाया बॉन्ड ब्रेक करना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साइड में ऐड कर दो, पाया बॉन्ड ब्रेक करो इस तरह से. फिर वापस हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करो और ये सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक करो. तो वी गेट टू प्रोडक्ट. एग्जाम्पल है उसमें प्रोंटोसिल, ये ड्रग है सल्फोनामाइड कैटेगरी का, प्रोंटोसिल. सो ये डबल बॉन्ड है एन डबल बॉन्ड एन, प्रोंटोसिल. ये सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल है. सेम चीज करना है. तो यहाँ पे आपको दो कंपाउंड मिलेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पाया बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है. तो वी गेट टू प्रोडक्ट. कौन कौन से प्रोडक्ट, सल्फानिलामाइड एंड दिस वन इज ट्राई अमाइनो बेंजीन. ट्राई है ये, ट्राई अमाइनो बेंजीन. इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है सल्फासैलाजीन. ये भी सल्फोनामाइड है, इसमें भी अजो रिंग, अजो स्ट्रक्चर है, एन डबल बॉन्ड एन. तो इसमें भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फापाइरिडिन. सो इट इज दी अजो रिडक्शन. तो यहां पर हमने दूसरा रिएक्शन भी कंप्लीट किया फेज 1 का, दैट इज रिडक्शन. सी पहले ऑक्सीडेशन हो गया, उसके बाद में रिडक्शन शुरू किया था हमने. फेज 1 का सेकंड रिएक्शन रिडक्शन, उसमें तीन है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड एंड अजो रिडक्शन. तो इट इज द सेकंड रिएक्शन ऑफ फेज 1. अब जो फेज 1 का थर्ड रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन. ये लास्ट रिएक्शन है फेज 1 का, तो ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. So it is about the reduction. So if you have any doubt, you can ask the question in chat box.